Washington Sundar has been ruled out of the T20I series against New Zealand, and we are looking for replacements. And I know Ayush Badoni आ गए हैं टीम में, but why is no one talking about Krunal Pandya? He just won an IPL यार, and he is the same profile. Washington Sundar, Akshar Patel, Ravindra Jadeja, although he's left arm, and Krunal Pandya. ये एक ही bracket के players हैं. You know, these are all all-rounders, spinner all-rounders, and they can bat pretty well. We've seen them bat. और अगर वॉशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए हैं, ही इज़ आउट ऑफ द सीरीज, एंड इफ ही इज़ पोटेंशियली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, आई थिंक यू शुड ब्रिंग इन कृणाल पांड्या. आप आयुष बदोनी को ला रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज़ यंग एंड यू वांट टू ग्रूम हिम, बट आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्सेशन डू वी हैव विद ग्रूमिंग प्लेयर्स. आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, ऑस्ट्रेलिया इतनी सक्सेसफुल टेस्ट साइड क्यों है? बिकॉज उनके फास्ट बॉलर्स आर ऑल अबव 30 जो डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा कर रहे हैं. हम वी आर ऑब्सेस्ड विद यंग टैलेंट भी. यार एक्सपीरियंस को भी मौका देना चाहिए. आप माइकल नीसर, स्कॉट बोलैंड, दीज आर ऑल सीजनड फास्ट बॉलर्स यार, और दे आर यूजुअली आउट ऑफ द टीम, बट कोई मेन बॉलर बाहर हुआ, दे ब्रिंग देम इन बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस बिहाइंड देम. हम दे अंशुल कंबोज, नथिंग अगेंस्ट देम, बट वी आर जस्ट लुकिंग फॉर यंग टैलेंट दैट वी फॉरगेट कि हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस बॉलर्स भी हैं thanks to our domestic circuit. So I think that's something we should really look at. And Krunal Pandya यार अभी IPL जीत के हैं, and he's been man of the match in the IPL finals twice. एक बार मुंबई के लिए और इस बार RCB के लिए. And he will be pretty damn effective on the Indian tracks. So why not him यार? I can nothing against Ayush Badoni यार. He could prove to be a match winner as well. But Krunal Pandya is a seasoned player. He हमने देखा है वो क्या कर सकते हैं. So why not him? I think he deserves a chance as much as anyone. तिलक वर्मा इंजर्ड हुए हैं, so he brought श्रेयस अय्यर in because उनका बनता था, and there's still a chance that he may not play the World Cup. But I still think यार it is a left field choice. Krunal Pandya is a dark horse in this race, but I think we should look for him यार, because I think if India wants to win the World Cup without Washington Sundar, I think Krunal Pandya will be a key figure. And there's just one more thing I want to talk about. Ki we are obsessed with young talent and everything. I get that to some extent, but we are not ready to accept new things as a cricket board or as a cricketing country, because when Virat Kohli decided that he wants to step away from T20I captaincy, he said in his statement that he wants to continue to be the captain of the ODI and Test team, but हमने उनको हटा दिया from the ODI team because our logic at that time was कि we want one captain for white ball and one for red, which is understandable, which is all right. But जब we did this, उसके ठीक बाद ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि पैट कमिंस became their ODI and Test captain and Mitchell Marsh became their T20I captain, and just look how well it has worked out for them. उस अपॉइंटमेंट के बाद पैट कमिंस won the WTC and the World Cup. I'm not saying कि विराट कोहली अगर कैप्टन होते ODI के तो हम शायद 23 का वर्ल्ड कप जीत जाते, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स दैट हैव नेवर बीन डन बिफोर. पैट कमिंस से पहले ये विराट कोहली कर सकते थे, जो कि बस ODI और टेस्ट में कैप्टनसी कर रहे हैं. अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया ने किया ही ना. इट्स आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ऑब्सेशन डू वी हैव कि नहीं इस बॉल में हम एक ही कोच रखेंगे. यार just try unorthodox things. And Gautam Gambhir, I for the life of me cannot understand कि उनका selection or run as test coach would depend on the performance in the T20 World Cup. This is just bizarre. कि how can you take a call on a test coach based on their T20 performance? That just does not make sense. But that is how our cricket board thinks for some reason. And this is just, we as a board are पीछे हैं. हम लोग पास्ट में हैं, हम लोग बहुत पीछे हैं. हमारे पास मौका होता है कुछ नई चीज़ करने का, बट वी हेजिटेट, और हमसे पहले ऑस्ट्रेलिया करके चला जाता है. एंड देन लाइक यार ये इतने अच्छे क्यों हैं, हाउ आर दे सो सक्सेसफुल? बिकॉज यार उनको मौका दिखता है, दे सी एन ओपनिंग, दे टेक इट. हम लोग नहीं, वी थिंक दैट इट हैज़ नेवर बिन डन बिफोर, तो हम नहीं करेंगे, नहीं, वी वोंट बी द फर्स्ट वंस. दिस इज वॉट वी डू. सो आई थिंक यार इट्स टाइम टू चेंज. ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो प्रीटी बम्ड अबाउट द फैक्ट कि WPL में बस 2 ग्राउंड्स हैं. Like we as a country are blessed with so many cricketing grounds, and I can understand कि अभी हमारे देश में इतने major events हुए हैं. We got the Women's World Cup, फिर इतने bilateral games हो रहे हैं, फिर IPL भी है, फिर T20 World Cup भी है. So obviously बहुत सारे grounds busy हैं, but still we have plenty of grounds जहाँ पे आप WPL करा सकते हैं. So why only DY Patil and Vadodara? 2 venues is a shame यार.
For a country as big as India, 2 venues कुछ नहीं है यार. You should at least have had 3 to 4 venues for the WPL. Just यार, BCCI sometimes it acts like the most backward cricket board, जबकि it is the richest and the biggest. Things need to change यार.